I think we can give it a minute because very quickly I see the number of participants going up now. Yes, yes. Good evening, partners. Wish you warm welcome to our weekly session. Okay, and first, let me congratulate all of you because we started SIF journey last September. Almost 6 months is completed, and last 6 महीने में हम बात करें कि हमने क्या अचीवमेंट की एज ए पार्टनर्स. ओके, तो करीबन करीबन 500 प्लस पार्टनर्स है सर्टिफाइड. मार्केट में 3000 पार्टनर्स या एमएफडी है, उसमें से 500 प्लस हमारे हैं. ऑलमोस्ट वी होल्ड दी 15% plus market share in the SIF certification. It shows that what kind of the focus we have. Okay, तो हमने सबसे पहले अप्रैल से ही कंटेंट इंट्रोड्यूस किया था. जून से हमने बैच लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था, ऑनलाइन एंड क्लासरूम बैचेस, and that help you to pass the certification relatively easy compared to the other platform. And in last 6 months, I am happy to share that we have crossed the 111 crore milestone SIF AUM and 1000 plus clients. ओके, तो करीबन करीबन हम बात करें 111 करोड़. ये पार्टनर का बिजनेस की बात कर रहा हूँ. वी हैव अनदर चैनल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. So good, very good. Congratulations all of you for driving the SI business and achieving the 111 crore milestone. And I'm sure that this is the beginning. Okay, and where the new products are coming. Okay, it will help us to more deepen our understanding about the SI, as well as we can provide the variety of the SI products to our customer as per their risk profile and their requirement. Okay, so let me introduce Mr. Deepak Singh. He's a AVP with the Franklin Templeton since 2013. He is into business development role, having the qualification like FRM, CFP, LLB. And as you know that today's main objective is Franklin Templeton is coming with the SIF product into long short equity. Brand name they have chosen the Sapphire Long-Short Equity Fund. Okay, so over to you, Deepak. You can introduce the speaker, as we have decided first 45 to 50 minutes. Okay, because this is I am sure that technical product, minimum ticket size is 10 lakh. So partner also expect thorough understanding about the product, and then they will be easily explain the benefit to the customer, their investor, and then last 35 minutes we can use for the Q&A sessions. Thank you, Keyur. Thank you very much for those kind words and good introduction. I hope I'm audible. Yes, yes, you are audible. Thank you. So, I actually really liked the way the focused approach has been taken by Prudent, and so many partners, 500 plus partners, are already certified, are NISM 13, which I believe is not a very easy exam. So, congratulations for that, for having that kind of certified number of people. Now, like Keyur Bhai said, the expectation that we will have first 45 minutes on presentation and then 45 minutes on the Q&A. I'll first introduce our speakers. Now, when this SIF came out, so we have for all this time we had mutual funds which with very very low ticket sizes of even as little as 500 rupees, whereas there were PMS and EIS which was 50 lakh 1 crore. SIF kind of bridged a very big gap that was there. That is at 10 lakh rupees ticket size, you can get an exotic, interesting product. Now, when SIF as an opportunity was presented to us, where you have a long only portfolio, and plus you can also do a little more than a long only. The thought was that you have known Franklin Templeton, we have worked with Prudent very closely, and we have funds that have been around for over 33, 34 years. Our AMC has completed 30 years, but all the funds that you know from our side were from fundamental equity side of the team. Our fund management team, CIO, based out of Chennai, who manage all the funds that you have heard, blue chip, which is now large cap, etc., etc. In case of SIF, our thought was that because there is a short component also involved here, in the sense this product has brought in more sophistication. So the decision that we had to make is, do we go with the same team
क्या हम उसी टीम के साथ ये लॉन्च करें प्रोडक्ट जो ऑलरेडी फंड्स मैनेज करती आ रही है, या इसमें थोड़ा अलग स्किल सेट लगता है? The answer was the skill set here is a little more evolved, a little more different, and hence we looked at our global office to understand कि do we have this competence? And as a result of this thought, we realized कि we want to work this product with a global different team जिनको एक्सपीरियंस सिर्फ लॉन्ग का ही नहीं बट डायनामिकली शॉर्टिंग मैनेज करने का भी एक्सपीरियंस था। तो ये प्रोडक्ट में जो एडिशनल स्किल सेट चाहिए था वो वी हैड दैट टीम अवेलेबल on the global side. So the two gentlemen that I'll introduce now. So first, I would like to introduce RAGHU KALLURI. He has been with Franklin Templeton for over 15 years. He has managed systematics, what we call systematics globally, जिसमें the team comes up, creates models, portfolios where not just long is there, but even short is there, and he will explain those aspects very, very detailed. Originally, he is an Indian, although he is based out of my Riyadh office. I am Bangalore pass out. He's a CFA himself, and he has been managing this kind of strategy for over 15 years. And the team that he's part of manages $34 billion globally. Arihan Jain, who's again Arihan Jain is a CFA. He's an engineer who's based out of my Bombay office. He will be the main portfolio manager based out of Bombay office, but he will be tapping into the global experience that we have of managing a sophisticated product like this. And Arihant will be the portfolio manager here. Arihant has over 8 years of experience. He has worked on the systematic side with the likes of Morgan Stanley, Quant One, as well as MSCI. So these two gentlemen is essentially what they will manage this fund for us. And like I said, अनलाइक म्यूचुअल फंड जहां पे खाली एक लॉन्ग ओनली यानी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, एसआईएफ में तीन चीजें हैं जो हम समझेंगे अगले 40 मिनट में। एक तो लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो तो आपका रहेगा ही। अदर देन दैट आपके पास एक टूल अवेलेबल है शॉर्ट करने का, बट क्या वो हर समय करना है, शायद उसका जवाब भी हमें मिलेगा। और जो तीसरी चीज है, अगर शॉर्ट करना है तो क्या चीज शॉर्ट करनी है। सो अनलाइक म्यूचुअल फंड यहाँ पे तीन बकेट्स की हम बात करेंगे, और वो तीन बकेट्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, कैसे उनकी ओर देखा जा सकता है, दैट Arihant and Raghu Kaluri will manage. I also have Satish Prabhu on the call, who is the head of products at Franklin Templeton Mutual Fund. So with that, Raghu, if I have said the context correctly, if Keyur, if I think if I have said the context correctly, I can hand over to Raghu, who can take the presentation forward. Sure. Sounds good. Okay. Yes, Raghu. Over to you. Yeah, sure. Hey, thank you, Deepak. Thank you, Keyur bhai. And so Hariyant is also there. So between both of us, we'll try and take you through. Again, thank you for the opportunity. So, जो maybe I think सबके पास deck तो होगा. So maybe what Deepak, was it shared, right? This deck was, I assume. Yes, details deck Shared that, went out okay. from Okay, Keyur Bhai's understood. desk. The deck went out. Understood. Okay, sounds good. We can Okay. put it up on the screen. Yeah, let Sure. me just share that stuff. Can you see my screen now? Yes, it's up. Okay, sounds good. Okay, so just to recap, from Franklin Templeton, as Deepak was pointing out, you've seen the products, which is coming from our fundamental team, and you're familiar with the flexi cap, large and mid cap, what we're offering. In this case, we've also seen that, with a lot of data there, with the shorting that's available, etc. Our team, that is me and Hariyant, we are part of our systematic quant equity team. I'll just explain कि हम लोग quant equity थोड़े अलग तरह से करते हैं, in the sense that it's not just the factor exposures that we're seeking. Still, it is an actively managed fund. But then instead of managing through, more like a fundamental, we manage more from a quantitative, lens perspective. And benefit of managing quantitative is that, for example, we manage close to around 10,000 stocks. And there is a lot of data out there. AI is a big, element right now that we're talking about, which you can leverage. More and more IPOs are coming, more and more stocks are coming. So managing it quant way gives us that ability
to have broader coverage. मतलब, for example, India में like we cover close to around 650 stocks, from our entire process perspective. So on those 600, 650 stocks, we have a view कि how is this looking from a quality angle से कैसा दिख रहा है, valuation, then sentiment or momentum कैसा दिख रहा है, broker क्या बोल रहा है उसके बारे में, what is the governance that is looking like, kind of thing. So almost like we have some 40 factors that we look at every stock, and ये जो information है every day we look at for all those 600 650 stocks that I'm talking about. And so the way we manage this is that हमारा जो team है, we manage close to 34 billion जो दीपक बोल रहा था, and a 34 billion में we manage we have some of the long only, the long short, ESG. So a lot of strategies is what we manage as a team, and most of us a global team है हमारा. So while Hariyant is going to manage this particular product, but Hariyant will get the support from our global team, which have been managing these funds for close to 20 plus years, and some of these funds are also in emerging markets. So that way we've been already we already have a good idea about how the Indian stocks, etc. So in addition to this, 20 plus years experienced, PM team, which have been doing this process, we also invested heavily in the technology, because as I was saying, हमारा एक platform है called as a Mosaic, जहाँ पे एक 10,000 stocks globally, on all the parameters, we pull the data from multiple data sources, almost like 10 to 15 different sources. जहाँ पे if any company has reported the numbers, how is the profitability looking, governance का data कैसा है, what are the brokers saying. So it's like almost like 40 different dimensions is what we take on daily basis, and हर stock का एक score होता है. So now Hariyant as a PM will get to see how is the ranking or relative attractiveness of each stock within each sector. Large mid cap, small cap में how are the stocks looking. और मुझे large cap में pick करना है तो what are the good stocks. Small cap में pick करना है तो what are the good stocks. Same growth में pick करना है तो what are the good stocks. So there are multiple cuts that we have, and then we try and put together a portfolio on a actively managed basis kind of thing. So that is how we manage. So basically managing this, what it does is I'll just take you through आपको एक summary दिखाता रहता हूँ, so that because ultimately it's the numbers that talk. So ये हमारे global funds जो हम लोग manage कर रहे हैं, like in US, large cap, small cap, international, global, emerging markets. If you look at that, जो most of these funds जो है, a fee के बाद they're all outperforming by at least 2 to 2.5%. They're beating the benchmark by almost like 2.5, 3% there kind of thing. And most of these are in the top, like Morningstar rating mein, Lipper rating mein. But one thing that you need to notice here is that it's not just one or two funds. हम लोग 75 funds manage कर रहे हैं. Almost 90% of the funds have been outperforming the benchmark. So हमारा philosophy is to ensure that you cover more stocks, look at a lot of data, and do it more actively. Okay, so that because that is also very important in this space, so that you target for more consistent and steady returns. वो हमारा philosophy is, and that's what we really try and focus on that, and that is what you see. And while this is the global funds which have been there for last 20 plus years kind of thing, but हमने एक multi-factor fund भी launch करा था नवंबर में इंडिया में, जहाँ पे BSE 200 is a benchmark and Nifty 500 हमारा universe था. And this is the performance as of March end ka. Unfortunately, the market was down, but if I look at the relative performance, then the direct fund ka performance for the first 4 months was around outperformed by close to 1.63%, and regular fund has outperformed by 1.15%. So matlab is steady, very early hai. But then we have seen that these kind of funds have been outperforming by close to 2.5, 3%. At least 90% of the funds have been outperforming that. So we are fairly confident that this is doing what we expected it to do there kind of thing, right? And हमारा जो भी outperformance आ रहा है, this is mainly coming from the best stock selection. तो हम लोग every sector में stocks that we picked up,
are the ones which are contributing to the good returns there kind of thing. So that is what, philosophically that we try and focus, whatever systems that we have in place kind of thing, right? And we've been doing this for last, 20 plus years. Now, as Deepak mentioned, तो हम लोग अभी, so while that is how, so basically you looked at the team, then हमारे पास वो Mosaic platform है, we covered close to 10,000 stocks. Globally हम लोग long short चला रहे हैं. In US, global, everywhere we are running. India का थोड़ा different है, but process is same. Why I say थोड़ा different है, because India का जो अभी SEBI guidelines जो है, as you know, we cannot take more than 100% leverage, right? So it cannot be a leverage product. The gross exposure has to be 100% there. Globally जो चलाते हैं वहाँ पे like 150-50, 130-30, मतलब हम लोग additional leverage ले सकते हैं वहाँ पे, right? But still philosophy same. मतलब on the long side and the short side, जो stock pick कर रहे हैं हम लोग, that is basically giving us the alpha. On the long side भी दे रहा है और short side भी दे रहा है. It's just that I can take more leverage. अब इंडिया जो हम लोग अभी प्रोडक्ट अभी सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रोडक्ट डाल रहे हैं, विच पर्सनली आई फील इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज सेबी क्या बोल रहा है कि बस तुम कैश में मत डालो पैसा, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट एंड देन जनरेट द अल्फा, यू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, सो व्हेनेवर इट इज बेरिश काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो हमने सेम फिलॉसफी वी आर अप्लाइंग. तो सो जो दीपक जस्ट इंट्रोडक्शन में जो बोल रहा था, अभी कमिंग टू SIF, हमारे पास अभी निफ्टी 500 इज सो this SIF that we are launching now is different from other SIFs that you've seen. And Keyur bhai, I mean, I was very happy to hear that, the partners have done almost like close to 111 crores there. That's a tremendous, achievement, I would say, because it requires a lot of education and looks like, that's really happening there. But I just want to call out that this product is slightly different from some of the other managers who have launched the funds, because most of the SIF जो launch हुआ अभी तक, they're all like hybrid funds, मतलब arbitrage plus kind of fund launch हुए अभी तक. But there are very few are there in that equity only kind of thing. हम लोग अभी पहले जो launch कर रहे हैं, it's a equity side. Arbitrage हम लोग another 3-6 months में, we're going to come out with that particular product. And तो इस product में हम लोग, our idea of running this equity long short is basically run it like a flexi cap, मतलब आप अल्फा जनरेट करो, but with a better downside protection. अभी जो मार्केट में हो रहा है अभी लास्ट मंथ एक्सेट्रा, how do we take benefit of that, right? So that is basically the philosophy which we're going to run. इसका मतलब है like जब मार्केट ठीक चल रहा है, बुलिश है, सेक्युलर अप चल रहा है, then we will run it like a flexi cap, मतलब so that we pick up the stocks from large cap, mid cap, small cap, पूरा निफ्टी 500 से, जो भी better stocks से pick करेंगे around 60 to 70 stocks, and that will generate the alpha. So that is one alpha that I have, वो तो चल रहा है. The second is what we do is हमारा जो team है, we are part of a multi-asset team. तो हमारा globally हम लोग multi-asset strategies चलाते हैं, so which means that we also run a macro model, so which basically helps us to decide कि अभी मैं रिस्क ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ. If it is a risk ले सकता हूँ, then more into the equity. रिस्क थोड़ा कम लेना है, then more into the fixed income kind of thing. So globally हम लोग चला रहे हैं. So then what we've done is, and this is also something which we've been running for the last 20-25 years kind of thing. So that piece is what we've also considered as part of our model, as part of our fund here. तो हमारा एक India factors, for example, इंटरेस्ट रेट कैसा दिख रहा है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटिमेंट क्या हो रहा है अभी, निफ्टी 500 में what percentage of the stocks are above 20-day moving average and 60-day technical indicators क्या बोल रहे हैं. So there are almost like 12 to 15 indicators हम लोग देख रहे हैं, and then उसके हिसाब से हम लोग, I mean we come to a conclusion कि अभी वो मार्केट बुलिश में है या बेरिश में है. ठीक चल रहा है मार्केट, then I mean, so this model runs every day or every month kind of thing, right? I mean, typically it runs, on a in the live it's going to run on a daily basis kind of thing, so that PMs get a view whether abhi bullish chal raha hai or bearish chal raha hai kind of thing. So the first source is my long only. Second source of alpha is a timing model, because a timing model मुझे help करेगा कि मैं complete 100% long करूं या 80-20 करूं या 90-10 करूं kind of thing. So वो tactically, opportunistically I'm going to go short there kind of thing.
So that because जब चाहिए जब ही करूंगा, otherwise I'm going to run it as a long only kind of thing. That will be my second source of alpha. तो वो second part है. और third, जब मेरा टाइमिंग मॉडल बोल रहा है कि अभी बेरिश है मार्केट में थोड़ा, like then we are going to then only then we will create a short portfolio, because जब मार्केट ठीक चल रहा है then the there's no point in really shorting it, because I can generate more alpha on the long side, right? So long only एक alpha है, timing model है, and then whenever timing model says it's going to be bearish, then I'm also going to pick up the stocks on the short side, that kind of thing. So ये तीन sources of alpha मेरे रहेंगे अभी. हाँ Keyur, हाँ, आप कुछ बोलो. ये आप उसको 150 जूम कर दीजिए ना, तो इट विल शो बेटर टू द पार्टनर्स. 150 जूम करूँ क्या? या 150. अभी बेटर है? Yes, now perfect. If you can press F11, that will be better. F11. F11 करूँ क्या? Yeah. Thank you. ठीक है, no problem. ठीक है, sounds good. Thank you, sir. Yeah, thank you. So तीन sources of alpha रहेंगे, एक long only, timing model और short side, right? And so this is how we're going to run this. ठीक है? And why I say तीन sources of alpha is because if I look at the market, अभी हमारा, again, if I look at last, I mean, typically, as we all know, there can be a bull market. जब bull market चल रहा है, it doesn't really make sense for me to short it, right? So now I'm going to run it as a typical, long only alpha kind of thing, right? So this is the flexibility I have in this product. That's number one. जब flat market हो रहा है, मतलब कुछ sideways, कुछ ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, it's going to be flat kind of stuff, मतलब very range bound हो रहा है, then there is a ability for me to short it, right? But जब short करूंगा, then maybe I do that for whatever period it is showing more bearishness, but again, immediately I should be nimble enough to change that to the long kind of thing. So in this situation, जब flat market है, then there is ability to generate alpha from both long only as well as short only, and which is what we're going to do in this process there. जब bear market चल रहा है, अभी last month से अभी चल रहा है, then alpha basically is going to come from the shorting, the stocks there kind of thing. So that also is the flexibility that we have there. Then again, the market may extremely high volatility hai, even during that time, there is a possibility that we can generate the alpha from the long, but there is also possibility that we can generate the alpha from the short side, that kind of thing. So there are opportunities in different market regimes, and based on that, we will fine tune our strategy and then going to be nimble enough and then run it, right? And the reason why I say we are geared to run this is because हमारा जो Mosaic platform है, every stock, every data, हर दिन, हरियाणा the PMs, they get to see अब वो stock कैसा दिख रहा है, ये technology में कौन से best stocks है. It's not that we are going to approach this with a trading mindset, but having the data is very important to ensure that we position our portfolio based on the regime, that kind of thing. For example, timing model मेरा बोल रहा है कि अभी bearish है, तो मेरे long only से मुझे 90-10 करना है. Then immediately I also need to know what are the stocks that are there on which are looking very good, the stocks which are looking very bad, right? Only then I can build a long short portfolio there, and that ability is something which we have there, kind of thing, right? So this is how we're going to approach. And so these three sources of alpha that I'm talking about will help us to position to generate the alpha in all the four regimes, that kind of thing, right? That's the quick summary. And तो हमने क्या करा या so before I go, we have actually tested this for last 25 years. I'll just take you to the numbers. But before I go to the numbers, I just want to spend some time in हमारे जो हम लोग, मतलब how do we really identify good stocks and bad stocks, right? Just to let you know, while we're managing quantitatively, but हमारा पूरा outlook जो है fundamental lens से देखते हैं हम लोग. But fundamental done in a more systematic, or rather we leverage the technology and try and ensure that we look at multiple factors, more diversified, and then try and reduce the risk there, kind of thing. So suppose quality देख रहे हैं हम लोग. So typically quality factor जो अपना nifty momentum, nifty quality factor जो होता है, सिर्फ 2 या 3 factor देखते हैं कि profitability कैसा दिख रहा है, EPS growth कैसा दिख रहा है, etc. But हमारा जो lens है, we think this just
this is a very limited view, very narrow view of looking at any particular company from a quality perspective. हम लोग like we look at a lot of factors कि उसका उसके पास sufficient money है for capex or not, वो innovation में R&D में spend कर रहा है नहीं कर रहा है, how is the governance of the company, the management and all that is doing, because all this data that we are pulling, right? How is the profitability looking like? So quality like it's very holistic, it's not just 2 or 3 dimensions. So this is what really gives us that steady returns, that kind of thing, right? Then जब value देख रहे हैं हम लोग, we again look at, see हमारा व्यू पॉइंट है कि it's not just हम लोग historical देखेंगे, एक signal आएगा, but it's very important to look more future, futuristic kind of thing. वो कहाँ से मिल रहा है हमको? Like that is basically we're getting it from the brokers. So broker estimate जो भी cover कर रहे हैं companies का, we track every broker and say कि who is a broker who is covering a particular company in a better way. Then whose broker को हम लोग ज़्यादा weight देते हैं हमारे model में, kind of thing, right? So the idea is to really look at more future looking kind of stuff. This again gives us that stability, to the entire model, that kind of thing. So if you notice, there are almost like 30, 40 factors that, we try and look at. And that is what really gives us ability to, keep it more consistent, performance, that kind of thing, right? And so now, as you know, like we score every stock, right? So जो stocks अच्छे दिखते हैं, quality पे, value पे, momentum पे, and all that, those are all in the long side. जो stocks गंदे दिख रहे हैं from a quality, value, sentiment kind of thing, those typically will be on the short side kind of thing, because that's where, so when we short the stocks, it's very important to understand that we don't short the stock only on the price, only on the technical indicators. Uska fundamental, so when you look at all the fundamentals also, when you also look at what are the brokers saying, then you will get more confidence in shorting the stock. And that is what we try and do as part of this process, that kind of thing, right? So just to summarize, experienced team, technology hai, Mosaic platform, 10,000 stocks is what we cover. We are doing this long short globally. So we have that experience. And there are 3 sources of alpha: long only, timing model, and the short side, that kind of thing, right? Now, having said this, तो हमने इसका back test करा, because obviously it is not having a track. So जब back test हमने करा था, then this is how it is looking. So pure long only जब चलाएंगे, the Nifty 500 was up like 27 times. और 25 years में around 13.6% return था. सिर्फ long only चला रहे हम लोग, so around 17% return was there. And जब long short चला रहे, another 1.7, 1.8% excess return मिल रहा है आपने को, right? And ये कहाँ से? So this is how the story is, that so as you can notice, जो alpha हम लोग generate कर रहे 5% यहाँ पे over the benchmark, and that is what we've seen over the last 25 years. Almost close to 70% is coming from the long only. Same process रहेगा, but another 30% में around 20% would come from our timing model, another 10% would come from our shorting model, kind of thing, right? Why I say this? Because typically we have seen Indian market really only going up in one direction. But so if the market is expected to be more bearish or more sideways, etc., kind of thing, then you will see more contribution coming from the timing model and the short side there. But if you're expecting the market to go up only in one direction, then more contribution would come from the long only, that kind of thing. So that's why, considering last 25 years, it's all been in mostly in the up direction. So we've seen almost 70% coming from the long only, and another 30% coming from the timing and the short side, kind of thing, right? So that's how it is there. So as you can see, iska beta jo hai kam rahega, and risk bhi kam rahega, which is what basically is going to help from generating that, matlab tactfully or opportunistically go short whenever it's a bearish market, and then you generate the alpha, that kind of thing, right? And which is so that's a summary overall 25 years ka. But I just want to call out these 4 phases that I'm talking about, because a product jo hai, it's very in the sense very flexible, and our idea is to ensure that you
position the product based on the regime that is there so that you get benefit of it. So let's say it's a bull market, then हम लोग long only चलाएंगे. In that market, we have seen that this is generating the alpha. So as you noticed, हमारा 2007 से 2013 it was a flat market. As you know, like benchmark was just 0.25% negative return there. उस टाइम में भी हमने देखा था कि इसका it has generated positive return. ये इसलिए हुआ because we looked at the timing model and we said what are the times when we should short it, etc. So those are the times which has added the additional alpha to the overall process there. So long only se bhi alpha mila tha, and then timing model and also the short side. So all three sources kicked in during this particular phase there. And one more important point, हमने globally what's that we have seen is that especially when you're running a long short, typically क्या होता है कि the moment we say hedge, is basically saying risk नहीं लेंगे हम लोग. But that we feel may not be a relevant thing. I mean, maybe a relevant for certain period in markets like India or even in global markets, because equity markets typically go up, right? Because so if you go short, it'll help you whenever the market is down. But it's also important that as soon as the market starts, going up, you should be nimble enough to again change your positioning from the long short to the long kind of thing. So recovery जो होता है as soon as the market goes down is very important that our strategy is positioned accordingly kind of thing. So as you notice here, जब .com bubble था, GFC or EU debt crisis or pandemic, during that time, this long short model has generated better alpha. But जो recovery post हुआ था, उस time पे भी because we immediately switched over to the long only, it also helped us to generate the alpha in that recovery phase. Because this is again very important, when you're running a long short and especially based on what SEBI has come up with the guidelines there, right? Because that's what, the idea is that, you generate the alpha, but you also try and have a better downside protection, that kind of thing. And so this is extremely important, from our process perspective, and this is how the product is going to run there. And similarly, the market extremely volatile hai, us time pe bhi, we've seen that we tactfully take that short position and then generate the alpha, that kind of thing. So this is so I'll just take a pause before I go further, but just to summarize, experience team है, globally हम लोग चला रहे हैं, and Mosaic एक platform है हमारे पास. This is what the global support which is going to be provided to the local portfolio managers. Hariyant is already managing, as Deepak was talking about, he understands the Indian market very well. Along with Hariyant, हमारे पास और एक Mukesh Jain, who is running our arbitrage fund, जहाँ पे shorting ज़्यादा होता है, वहाँ he is also going to be helping in terms of running this fund. तो local team भी है हमारे पास strong, and then process is set. And I also want to call out that जब long short जब चला रहे हैं हम लोग, especially on the short side, it's very important that it has to be very, very data driven. Because shorting, because हम लोग अभी short position लेंगे, we have to track that on a daily basis. कि अभी उसका liquidity है नहीं है to close the position. When we took the short position, उसके fundament मतलब उसका valuation बहुत ही खराब था. But then what if there's a rally and it starts going up? Suppose 10% से ज़्यादा हो गया, then we have to close that position and get to a different position kind of thing. So it has to be managed very actively, and that's how we are going to do it. And for that, we need a strong local presence. So that's what Hariyant and Mukesh are going to bring in. But we also need a lot of data there kind of thing, and which is what we already have the process. We've been managing globally, and it is fine-tuned to and all this data is already available there kind of thing, right? Which basically gives us better ability in terms of managing this entire long short there kind of thing. So I'll just take a pause, but happy to answer anything there. Hariyant, आपको कुछ ऐड करना है? No, I think आपने सर cover कर लिया लगभग, but if I need to summarize, this is more like a diversified equity portfolio with better downside protection in that sense, because first goal is to give you equity type return, and then try to see naked shorting के through, hedging के through, how can we protect the downside, I think. So that's the goal of this particular fund.
which is very different compared to a hybrid kind of a fund or absolute return kind of a fund. So this fund ideally or typically should be in a, like when you are thinking about the risk part from your client perspective, should go into your equity allocation, I will say. Okay. Thank you very much, Mr. Raghu and Mr. Aryan, for your insightful presentation. So let me just ask a couple of questions on behalf of partner, and then I'll open session for the partner. They can unmute and ask the question. Meantime, partner can write their question in chat back, so I can ask also, and I'll also give you opportunity to ask the question. Okay. So now. Uh, Objective is to because I am a heading SIP category, okay, and my objective is to better understand product. So I'll like to ask the first question. In India, specifically, quant product is not successful like a fundamental value, or you can say a growth oriented or blend fund. So, what is your takeaway? How you are different from the other quant product in the market? Yeah, sure. You want me to go ahead, Keyur, or you? Yes, yes, want to you can answer the question. Sure, sounds good. Tikku, very good point, Keyur. I think we see one thing I want to answer from that is India में what we've seen is that जो quant fund जो launch करा गया था, they are mainly the factor funds. Okay. Like for example, value के हिसाब से you pick up some stocks, deep value, right? Or momentum funds. Okay, the stocks which have done well in the last 6 months, you pick up a quality or whatever kind of thing, right? But but running this for the last 20 plus years, and again all quant and more sophisticated, more systematic, because we are running this for a lot of pension funds and all that also, right? So what we've seen is that जब value हम लोग pick कर रहे हैं, then it will have a limited shelf time. मतलब it's going to work only for a limited period of time kind of thing. That's number one. Second, हमने क्या देखा ये जब quant fund जब अभी some of the other funds that we've seen, for example 500 stocks है Nifty 500 में, they end up picking almost like 30 stocks, right? 30 is like very very concentrated. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें the 30 stocks, suppose मुझे बहुत those stocks are showing up in the technology, let's say, right? So technology will be overweight by 15%. Possible, right? Because मुझे value ज़्यादा technology में दिख रहा है. But then technology का भी like 3-4 months back, with the entire AI and all that kind of thing, it started going on kind of thing. अब उसमें value दिख रहा है, but macro perspective, so that's not really a sector that I should really invest there kind of thing, right? That is the reason why a lot of quant funds, which are more factor based, which invest in 30-40 stocks kind of thing, they're very, very highly concentrated, and that's the reason why they underperform for a lot of period. But whatever they're aligned, if that environment works, they really do well. So it means that they can generate 8% return, but they can also go down 20% return, that kind of thing. That's possible, both extremes, because very highly concentrated है. हमारा जो quant है, हमारा thought process different है. And one metric I want to give you is 75 funds हम लोग manage कर रहे हैं, 90% of the funds have been outperforming the benchmark. तो हमारा thought process है, you cannot look only at one or two factors. हमारा, because stock जब मैं देख रहा हूँ, I need to look at very fundamentally देखना पड़ेगा मुझे, because FT is a fundamental shop, right? And we work a lot more with our fundamental teams also. तो हमने, and all of us portfolio managers जो बताया था हमने global team, including myself, we worked with fundamental teams initially during part of our career. Then उस time पे हम लोग अभी fundamental team से क्या देख रहे हैं हम लोग? So we try and look at companies which are good on profitability. उसका governance कैसा है? Is it spending good money on innovation or not? There are almost like 40 factors. Acquisition, for example. एक research कर रहे हैं, एक research teams dedicated है वहाँ पे. Like for example, what we've noticed is that the companies which grow organically are likely to do well as compared to inorganic growth, that kind of thing. तो हमारा उसका एक factor है. Then lot of emphasis is also given to forward-looking estimates. And forward-looking estimates हमारे उसमें ये quant funds में नहीं होते, तो lot of funds में. तो वहाँ पे miss हो जाते.
So Okay. these are all the differences what we try and bring. That's number one. Number two, और एक point केवल भाई मैं also want to let you know that जब हम लोग stock pick कर रहे हैं, the number of stocks that we pick up around 60 to 70. ये इसलिए pick कर रहे हैं because we want, अभी market में क्या चलता है? Market में it can be any sector, it can be large cap, mid cap or small cap, or it can be growth चलेगा, कभी high risk चलेगा and all that. हमारा so when we because we have a tools, जब हम लोग portfolio construct करते हैं, we try and ensure that we have good stocks in every sector. हर सेक्टर में होता है हमारे पास, जो that whatever sector works, this you have good stocks there. And large, mid and small cap में होता है, growth में होता है, value में होता है. So वो क्या, so whatever regime works in the market, which I don't have control, I have the good stocks there, and that is going to give me that steady returns of ones and twos. मतलब मेरा my fours and sixes में नहीं कर रहा हूँ, which is what a typical quant equity does, like 30 stocks, 40 stocks. हमारा active quant है, तो हमारा ones and twos में कर रहे हैं हम लोग. So there are two types of quant. One is passive and second is active. So you are part of the active quant. We are part of the active quant, absolutely. Okay. We are part of the active quant and more systematic. Okay. Thank you. Thank you very much. One more question. You talked about three sources of alpha. Okay. Third, I noted timing. Can you elaborate how timing works? Works there, right? Okay. So timing हम लोग क्या करते हैं? So अभी we look at a combination. हमारा viewpoint है, the markets are all connected. मतलब global market, India market is all connected, and we are seeing that, right? Correct. So जब timing model जब चलाते हैं हम लोग, only looking at India macro factors and all that would not help. Okay. मतलब that's obviously a primary input, but हमको global भी देखना चाहिए, right? And only looking at global again is not going to help. So we need to have a combination of both global and India. तो हमारे जो timing model में we have global factors, we have India factors. Okay. That's the number one difference. ठीक है? And so now, what do we look into that? So what do we look into that? Now, why are we looking into the timing model? The reason why we're looking at the timing model is to understand कि typically जब market एक direction में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मुझे long only is going to give me better alpha opportunities. That's clear. कि short नहीं देता है, मुझे long देता है, तो मैं long करूँगा. जब market sideways जा रहा है, down जा रहा है, etc. If I can identify that, then I can also short the stocks because जब दो जगह मुझे alpha generate करने का possibility होगा. So now to identify if the market is going sideways and is it going to continue in future, what do I need to look at? I need to look at what is the market doing right now. इसका मतलब है what is the dispersion that I'm seeing in Nifty 500? What is the dispersion that I'm seeing in S&P 500? Okay, globally क्या देख रहा हूँ? What percentage of the stocks are above 200-day moving average, 100-day moving average, technical indicators and all that stuff. वो एक देखना पड़ेगा मुझे. Second, then is this going to continue? Is this going to continue? मुझे वो insight आएगा by looking at the macro data. मेरा OECD data क्या है? मतलब मेरा manufacturing sentiment कैसा है? Inflation क्या चल रहा है अभी? Interest rate spread क्या चल रहा है मेरा? तो that data, the technical indicators along with the macro data, in both global and India, almost like 14-15 factors when I look at it. Suppose हर कोई factor मेरा bearish बोल रहा है, इसका मतलब है deep recession है, तो मैं 80-20 और 75-25 चलाऊंगा मैं. Suppose इसमें से 14-15 में only market अभी थोड़ा bearish दिख रहा है, but macro मेरा अच्छा दिख रहा है, right? Then I will not go 80-20. Maybe then in that case, in that scenario, I'll only go 90-10 kind of thing. तो मैं systematic करने वाला हूँ. Okay. That is basically the philosophy. And then more important, the reason why timing, तो मैं decide तो कर लिया. अभी PM जो आर्यन अभी क्या करने वाला है कि अभी like the timing model is going to run daily basis. अभी macro data तो मुझे daily नहीं मिलने वाला है, right? But market data मुझे daily मिलने वाला है, change होने वाला है मुझे, right? So उसके हिसाब से suppose मैं short लिया मैंने, but कुछ अभी market improve हो रहा है, then immediately I'll close my short positions and get to the long positions. So that's how my timing. So to summarize, timing में मेरा global plus India रहेगा, almost 14-15 factors रहेंगे, and daily चलेगा, and which is what is going to tell us whether I should run long only or long short kind of thing. Thank you very much. One more question. You have in mutual fund same product, multi-factor fund, and same you are launching in SIF. So can you
give a quick important key differences. What are the key difference between the that fund and the same product in SIF? So इसमें so basically हम लोग मल्टी फैक्टर जो चला रहे हैं अभी हम लोग उस फंड इफ आई लुक एट इट, जब मेरा टाइमिंग मॉडल बोल रहा है कि मार्केट ठीक चल रहा है, इट्स ए बुलिश काइंड ऑफ थिंग. सो दिस प्रोडक्ट एंड माय मल्टी फैक्टर विल एग्जैक्टली बी सेम. ओनली डिफरेंस इज जो मल्टी फैक्टर हमने लॉन्च करा था नवंबर में, उसका BSE 200 बेंचमार्क है, वो लार्ज एंड मिड कैप फोकस्ड है, वो थोड़ा डिफेंसिव प्रोडक्ट है, राइट. इस प्रोडक्ट में मेरा निफ्टी 500 इज द बेंचमार्क. सो निफ्टी 5, सो इसका मतलब है मैं लार्ज मिड स्मॉल ऑल तीन में मैं स्टॉक पिक करूंगा एंड बेस स्टॉक सिलेक्शन. दैट्स वन बिग डिफरेंस जब टिपिकल चल रहा है. सो देयर इज, but otherwise the process of picking up the stocks, construction and all that is going to be same, but my coverage will be more wider there. Okay. Then second difference, obviously the timing model. And the third difference is whenever timing model says, then I'm also going to have the stocks on the short side there kind of thing. So these are the three differences that I'm going to have between. So एक है long only में मेरा Nifty 500 is the coverage universe. Okay, वहाँ पे सिर्फ 200 था. Okay. And second is having the timing model, and the third is वहाँ the पे short नहीं side. है. वहाँ पे timing, because वहाँ पे हम लोग सिर्फ pure long only चला रहे हैं. So cash call will not be there in the multi-factor fund. क्या बताया अरिंद आपने? Cash calls, like we will not go 20% वहाँ or पे 50%. आप कैश कॉल नहीं ले रहे हैं. ओके, नहीं इसका ले मतलब full कि equity ले. आप जो है वहाँ पे फुल्ली इन्वेस्ट रह रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप कैश कॉल लेंगे एज वेल एज आप शॉर्टिंग भी करेंगे. Yes, yes. Okay. तो जो So it, yeah. So it will be very, very active compared to the multi-factor when it comes to cash call, naked sorting or hedging. ओके, वेरी So very differentiated in that sense. ओके, थैंक यू. सो पार्टनर, जो हम बता रहे हैं डे वन से कि एक म्यूचुअल फंड जिसको हम कहते हैं लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट, जहाँ पे फंड मैनेजर का मैंडेट है फुल्ली इन्वेस्टेड का, 95% मिनिमम ऑन एवरेज फुल्ली इन्वेस्ट रहता है, और वो वहाँ पे कैश फ्लो नहीं लेता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है, क्लाइंट ने उसको बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी दिया है. जबकि यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो लॉन्ग शॉर्ट दोनों उसका मैंडेट है डाउन साइड बेटर प्रोटेक्शन करने का. तो जहाँ पे हमने देख रहे हैं कि आपका मल्टी फैक्टर फंड जो है उसका 1% का इम्प्रूवमेंट बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन है. तो समझो आज से 3 महीने पहले आपने समझो कि लॉन्ग शॉर्ट एसआईपी इंट्रोड्यूस कर दिया होता तो अप्रोक्सीमेटली कितना बेटर प्रोटेक्शन रहता है इंडेक्स के सामने. तो अगर मैं देखता हूँ तो लास्ट 1 ईयर में हम मॉडल पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहे हैं. हाँ. सो मैंने देखा है कि उसका जो एक्टिव रिटर्न है इज मोर लाइक अराउंड 4% प्लस, 4 to 4.5. या, and this is after fees. So we have seen that it has been able to protect the downside if I look at last 1 year. तो आप ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में समझो कि इंडेक्स 10% डाउन गया, आपका फंड एग्जांपल 9% डाउन गया, तो ये आपका एसआईपी में 6% ही डाउन जाएगा. 6 से 7 के बीच में डाउन जाएगा. यस, परफेक्ट. यानी कि म्यूचुअल फंड के सामने 3 से 4% का एडिशनल अल्फा मिलेगा, बिकॉज हम यहाँ पे कैश कॉल ले रहे हैं, हेजिंग कर रहे हैं एंड शॉर्टिंग कर रहे हैं. यस, यस, गुड, वेरी गुड, थैंक यू. और एक लास्ट 1-2 क्वेश्चन पूछ के मैं ओपन करूंगा. यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग बुल मार्केट है, बट हमने पास में देखा है कि ट्रेंडिंग बुल मार्केट में भी काफी सारे इवन एनएसई 500 के स्टॉक्स या इवन एफ&ओ के स्टॉक ट्रेंडिंग बेरिश रहते हैं बिकॉज ऑफ सम सेक्टरल इशू या फंडामेंटल या टेक्निकल इश्यूज. तो क्या आपका कोई थॉट है कि ट्रेंडिंग बुल मार्केट में भी मैं ऐसे 5-7 स्टॉक बीएसई यानी एफ&ओ यूनिवर्स में से उसको फाइंड आउट करूं और वहां पे मे बी 1 वीक 2 वीक के लिए शॉर्ट करके एडिशनल अल्फा जनरेट करूं अपार्ट फ्रॉम हेजिंग एंड कैश कॉल? आई विल से कि यहाँ पे हमारा टेक्निकल कॉल थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज जब भी हम टाइमिंग मॉडल रन करते हैं वी ट्राई टू टेक अ व्यू ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स कि 3 महीने के लिए क्या रहेगा, बिकॉज इवेंचुअली टर्नओवर कॉस्ट भी है, चर्न कॉस्ट भी है. सो वी नीड टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट. बट ऐसा नहीं कि करेंगे ही नहीं, बट व्यू स्लाइटली मिड टर्म रहेगा, नॉट लॉन्ग टर्म, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए वी विल सी कि एटलीस्ट वी आर प्रेडिक्टिंग कि 3 मंथ्स के लिए मार्केट विल बी साइडवेज, एंड देन वी विल ट्राई टू इंक्रीज द शॉर्ट वेट, आई विल से. सो केयूर भाई, मुझे एक ऐड करना है यहाँ पे कि हाँ, बोलिए सर. as Hariant was saying, हमारा थॉट प्रोसेस यहाँ पे है कि
जब वो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू शॉर्ट, एंड एब्सोल्युटली जब बुल मार्केट चल रहा है, it's not that all 500 stocks are going up. Maybe 300 are going up and 200 are going down kind of thing. And we see a lot of opportunities to short. But considering that SEBI perspective से हमारा exposure can be only 100%, right? Because long plus short has to be 100%. Yes, correct? yes. So इसका मतलब है मैं if my long is giving me alpha, right? Then there is no reason to move that exposure from the long to the short. Okay. So that is why we would prefer to, because मैं suppose मैं long से मैं short करूंगा, उसका मतलब है मुझे वहां पे बेचना पड़ेगा, ट्रेडिंग का कॉस्ट होगा, then again यहाँ पे पोजीशन लेना पड़ेगा, वो टैक्टफुली मुझे एक वीक के लिए करना पड़ेगा. So जो अल्फा मैं एक्सेस जनरेट कर रहा हूँ, it has to cover all these costs. And actually long short में बहुत सारा पैसा वहां जाता है. We want to reduce that cost. We want to optimize that kind of thing. Okay. So only if there is a strong, मतलब beaten down stock है, whatever kind of thing, कुछ opportunity है, then obviously the PMs can take saying, hey, I want to take 2%, short there kind of thing. मतलब वो possibility है kind of thing. But then important thing here to consider is that a lot of places we have seen that mistake happening कि हम लोग एक week का लेते हैं, उसके बाद we think we take that, but actually you're also losing that because you're moving that exposure from the long. इसका मतलब है वहां पे भी गया आपका opportunity. So that is the thought process. So उसके लिए हम लोग थोड़ा we are also very sensitive to the cost that gets incurred there, and that really helps us to keep it lot more steady return profile there kind of thing. It's and very important when you're running a long short there kind of stuff. Because and that's one reason why we see unfortunately in the retail a lot of investors are not able to make money because वो tactically हो रहा है, and it's not a tactical. हमको way we look at shorting is more from a risk management perspective. So हमारा thought process उस पे है, and not to take a tactical alpha. Okay. I hope that clears. Thank you. So let me ask last question, then I'll open for the partner. So what is your thought process for going for minimum net equity exposure and maximum net exposure over a period of maybe 3 to 5 years, anytime? What would be net minimum and net maximum? Hariyant, you want to take that? Yeah, so net minimum हमने जो बैक टेस्टिंग भी रखा है वो net minimum हमने रखा है 60. Okay. So 60 will be the equity, net equity. Okay. And maximum will be 0-100. So that means pure long only portfolio. कोई शॉर्ट ही नहीं है. बिकॉज लेट्स से 2023 है, 2023 मार्केट इज जस्ट गोइंग वन वे अप. सो हमको बीटा के अगेंस्ट नहीं जाना. बिकॉज एज रघु वाज मेंशनिंग दैट लेट्स से अगर हमने शॉर्ट बकेट में 6 या 10% का अल्फा बना भी लिया, बट अगर मार्केट ही 20% अप है तो हमारा लाइक नेगेटिव, राइट? सो हमको शॉर्टिंग जब भी करना है व्हेन वी फील मार्केट साइडवेज है, स्ट्रेस है या बेयरिश है, only then we will do short. So that's why we will remain between 100 and 60. Okay, thank you very much. So the objective is to beat Nifty 500. I mean, that's how we are going with objective is to beat Nifty 500. That I understood. So, right? So you say that any point of time, you even in extreme bearish situation like this, you would be at an equity exposure of 60%. Yes, right. We can go down to net equity. And maximum in bullish run, you will be at 100%. Yes. Because हमने क्या देखा सर, रिकवरी बहुत फास्ट होती है. आप देखोगे कोविड के मंथ में मार्केट आई थिंक लगभग 20% गिरी थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एंड नेक्स्ट 15 डेज में 28% अप थी. ओके. सो मार्केट ने जस्ट रिकवर नहीं करा था, बट 5 से 6% का एक्सेस रिटर्न भी दिया था, एंड विद इन 15 डेज. एंड अगर वहां पे अगर हमने बहुत बेरिश पोजीशन ले ली विदाउट सीइंग द मैक्रोस, टेक्निकल और ऑल दो स्टफ, आप बहुत बड़ा अपसाइड अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे. इवन इन द डेक अगर आप देखोगे, कैन वी गो टू दैट स्लाइड जहां पे 2-3 बहुत सारे सिनेरियोस है 10% डाउन वाले. सॉरी, या सो इफ यू सी ना, यहाँ पे हमने बहुत सारे सिनेरियोस रखे हैं जब मार्केट 10% से ज्यादा नीचे गिरी थी, राइट? बट उसके बाद आप पोस्ट 6 मंथ रिकवरी देखिए, 80%, 70%, 60%, 20%, 32%, 17%. सो आप तो हमको ये रिकवरी भी चाहिए, लाइक वी वांट टू पार्टिसिपेट इन द रिकवरी आल्सो एंड प्रोटेक्ट द डाउनसाइड. सो दैट्स व्हाई वी आर वेरी कंफर्टेबल बिटवीन 60 to 100. ओके. सो मैं समराइज करूं पार्टनर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस है कि
जो एक म्यूचुअल फंड में मेन ऑब्जेक्टिव आपका लॉन्ग का है, 95% मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर रहता है, उनके पास हेजिंग का ऑप्शन है, बट म्यूचुअल फंड नहीं यूज करते हैं बिकॉज ऑफ कि उनको डर लगता है अंडर परफॉर्मेंस का, या मे बी उनको लगता है कि मार्केट अच्छा चलेगा तो हमारा कैटेगरी के सामने या इंडेक्स में अंडर परफॉर्मेंस होता है। जबकि यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट का मेन एडवांटेज या मेन थॉट प्रोसेस है कि भाई मुझे पार्टली म्यूचुअल फंड से बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन करना है, कैसे करूंगा, हेज करके, कैश कॉल लेके या शॉर्टिंग करके। ओके, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो प्रोडक्ट है उसमें 60 to 100 का उन्होंने एक रेंज बताया जिसे वो अपनी रिकवरी को बेटर कैप्चर कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया है। आई रिक्वेस्ट SIF सर्टिफाइड पार्टनर कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। प्रमोद जी, आपने एक दो क्वेश्चन डाले थे, तो आप लाइव है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या एनी पार्टनर जो SIF सर्टिफाइड है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरिहंत जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस 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 प्रमोद जी, यस आपका आ रहा है। क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप ही सेम उस एफटी क्वांट फंड को मैनेज कर रहे हैं, यस एंड यू विल बी मैनेजिंग दिस एसआईएफ आल्सो, यस सर। तो हाउ यू विल क्रिएट द डिफरेंस बेसिकली ऑन द अपसाइड आल्सो एंड द डाउनसाइड प्रोटेक्शन आल्सो? सर सबसे मेन डिफरेंस क्या है सर, म्यूचुअल फंड में हम कभी कैश कॉल नहीं लेंगे। ओके। इट विल बी अ लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो कि हम हमेशा 90 to 98% हमेशा हम इन्वेस्टेड रहेंगे। हम्म। तो अगर इक्विटी मार्केट नीचे जा रही है तो लाइक वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट बाय बाइंग गुड क्वालिटी कंपनी, बट हम ओके। किसी को शॉर्ट नहीं करेंगे या कैश इंक्रीज नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं होगा कि हम 20% कैश लेके बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं होगा मल्टी सेक्टर फंड में। राइट। बट यहाँ पे सर हम कैश कॉल भी लेंगे, नेकेड शॉर्टिंग भी करेंगे और हेजिंग भी करेंगे। ओके। सो ये काफी एक्टिव रहेगा इन दैट सेंस। जब डाउन साइड जाएगा या मार्केट, जैसे आप देखिए लास्ट 2 साल में मार्केट फ्लैट है, बट बहुत सारे स्टॉक है जो 30-40% अप भी है और 30-40% डाउन भी है, राइट। अब जो स्टॉक्स डाउन है उनको हम मल्टी सेक्टर में कुछ नहीं कर सकते बिकॉज नेकेड शॉर्टिंग अलाउड नहीं है, राइट। बट यहाँ पे अलाउड है। ओके। तो हम ऐसे स्टॉक्स को पिक करेंगे जो होपफुली नीचे जाएंगे। राइट। तो इसमें क्या होगा कि अगर बहुत एज रघु ने भी बोला कि अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही है विच इज लाइक 2023, देन मल्टी फैक्टर फंड एंड SIF विल बी मोर और लेस सिमिलर। ओके। बट अगर जो मार्केट फ्लैटिश है, बेरिश है, डाउन है, देन द पोर्टफोलियो विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। राइट। रघु सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, Sure. बिकॉज जो आपने अपना ये एसआईएफ लॉन्च करा है, ये बेसिकली क्वांट बेस पे लॉन्च करा है, और जो Correct. भी अदर एसआईएफ मार्केट में लॉन्च है, चाहे उनका इक्विटी बेस हो या इवन एक्स टॉप 100 का जो उनका मिड एंड स्मॉल कैप के हैं, दे आर ऑन टू द फंड मैनेजर बेस्ड पोर्टफोलियो। Correct. तो व्हाई यू हैव केम इनटू दिस, और एनी स्पेसिफिक मतलब बेनिफिट वी कैन हैव विद दिस? So, good point, Pramod ji. So, I'm just coming in 1 minute. Sorry, my battery is going down on this, getting my yeah, charger. Please, sure. Raghu, you continue. Sorry. Yeah, sure, sure. So, Pramod ji, देखो, हम लोग जब कौन बोल रहे हैं, as I was explaining earlier, हमारा आउटलुक जो फंडामेंटल आउटलुक ही है, ओके। बट हम लोग वो जो बिकॉज हमारा हमारा द वे वी मैनेज द फंड इज नॉट सेम लाइक अदर कॉन्ट फंड्स, जहाँ पे सिर्फ 30 स्टॉक पिक करे व्हाटएवर थिंग। हमारा लाइक वी अप्रोच इट इन ए फंडामेंटल वे कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, उसका गवर्नेंस डेटा कैसा है, एस्टिमेट्स कैसा दिख रहे हैं, लाइक वी ऑलमोस्ट लुक लाइक 40-45 डिफरेंट फैक्टर्स है, राइट। ओके। तो बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी आ गया, राइट, एंड ऑल दिस डेटा इज नाउ अवेलेबल। हम लोग एआई का मॉडल भी चलाते हैं, so all this information is now available in a platform to us, kind of thing. This is the new way of investing, if I would ओके। say, right? Which हम्म। is what we have been doing for the last 20 years. And actually, I was part of this team, to build all this platform, etc., kind of thing, for the last, 15 years, there, kind of thing, right? राइट। This gives us so that is one. Second, uh, fundamental team say, again, nothing to take away, but उनका very strong conviction होता है on the long side, like, ओके। hey, this stock will go well, etc., kind of thing. But they may not have very strong conviction on the short side, ये stock तो गिरेगा ही गिरेगा, I mean थोड़ा राइट। difficult होगा, right? But हम लोग जब quantile manage कर रहे हैं, because we score every stock from a fundamental perspective, quality कैसा दिख रहा है उसका, value क्या हो रहा है, estimate क्या बोल रहा है, technical indicator क्या बोल रहा है, almost like 40 different dimensions. हम जो जो वेरी ऑब्जेक्टिवली नाउ वी कैन डिसाइड लॉन्ग साइड में मेरे कौन से स्टॉक होंगे और शॉर्ट साइड में मेरे कौन से स्टॉक होंगे। शॉर्ट साइड में होंगे
जो क्वालिटी में गंदे दिख रहे हैं, वैल्यू अच्छा नहीं है उसका, मोमेंटम अच्छा नहीं है, गवर्नेंस अच्छा नहीं है. So some of these factors we look at and then pick up almost like 30, 40 stocks. Again, when you try and put together a short portfolio, if I Hmm. have just 10, 15 stocks or 5, 10 stocks, it's not going to help me. I need to have at least 30, 40 stocks in Indian kind of environment Hmm. जहां पे मैं डाइवर्सिफाई कर पाऊं. And Right. that is again what my quant हमारा जो मॉडल है. Again, when I say it's an active quant, Okay. because we don't rebalance this once in a quarter. We look at this every day, and Okay. that's an active quant. तो ये सेकंड बेनिफिट है टू रन इन लॉन्ग शॉर्ट करने में. एंड टिपिकली हम लोग ग्लोबली भी आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज आर रन बाय द क्वांट टीम्स. Right. व्हाई? बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ डेटा. Okay. एंड आई आल्सो वांट टू टेल यू वन मोर एग्जांपल. सपोज हमने, लेट्स से हमने क्वांट, आपने बहुत सही तरीके से पूछा. सो लेट्स से वी आर रनिंग ए लॉन्ग शॉर्ट नाउ. हमने शॉर्ट पोर्टफोलियो डाल दिया. अभी हमको उसको ट्रैक एवरीडे करना है, बिकॉज Right. ऐसा नहीं है कि मैं एक महीने के बाद उसको पोजीशन क्लोज करूंगा. व्हाट इफ मिडल ऑफ द मंथ मार्केट गोस अप काइंड ऑफ थिंग. सो Hmm. वो ट्रैकिंग करने के लिए मेरे पास अभी तीन, आई मीन 3 डिफरेंट लेवल्स है. पहले मैं मैक्रो डेटा देख रहा हूँ कि वो क्या Hmm. बोल रहा है मुझे. इज इट टर्निंग आउट टू बी बुल, आई मीन कुछ टर्न अराउंड हो रहा है क्या? टर्न अराउंड हो रहा है तो पीएमओ फिर पोजीशन क्लोज कर देगा उसका. नंबर वन. नंबर टू से लेट से मैं 30 स्टॉक लेके मैं स्टॉक पोर्टफोलियो में, अभी सॉरी शॉर्टिंग साइड में डाल दिया मैंने. अभी व्हेन आई आइडेंटिफाइड 30 स्टॉक्स, दे वर ऑल लुकिंग वेरी पुअर ऑन द स्कोर. अभी कुछ स्टॉक अच्छा दिखने वाला, इन द सेंस डीप वैल्यू है, रिटेल पिक कर लिया एंड इट स्टार्टेड गोइंग अप. देन इफ इट गोस अप, देन अगेन आई लूज माई अल्फा. तो उसको Okay. मुझे क्लोज करके कुछ और स्टॉक में डालना है. अभी मुझे, Right. because मेरा कॉन्ट मॉडल है, आई कैन पिक अप दैट स्टॉक काइंड ऑफ थिंग. Sir, एंड my मैं last मुकेश. question है, राइट, सॉरी, गो हेड. what will be the approximate stock you will be keeping into this, and it will be a large cap bias, or it will be like, flexi cap, you can choose, yes, some disturbance, large, mid or small, you will have some approximate idea you will be keeping into this. Aryan, do you want to take that? Yes, sir. So it will be run like a more like a diversified equity portfolio. Okay. And I will say typically large cap will be around 60-65%, Okay. and then 20-25 mid cap, and then 10 to 20 small cap. So in And that very diversified, yeah. the portfolio size will be like 50, 70, 30, like what? Uh, Approximately you lo- will be having. lo- in number of stocks in the long portfolio, around 60 to 80, I will say. Yeah. शॉर्ट डिपेंड कि कितना शॉर्ट कर रहे हैं हम, लाइक Correct. 10%, 20%, वो काफी वेरी करेगा, बट लॉन्ग विल बी 60 to 80. Right. But Thank you. short would be, I would say, around 20 to 30 stocks. Okay. Okay, so one interesting question is there from Rama. How is this fund strategy different from earlier long short AI fund launched by FT in the year 2019? So if I can come in here, Raghu, Yeah, before you. sure. So first of all, that was an AIF. On the Okay, AIF platform, the taxation is also different. I'm giving a holistic picture. okay, So there, the taxation was marginal tax rate, yes, 42%. The okay, first benefit of SIF is that you're getting an exotic strategy, but the taxation remains in line with equity mutual funds. So that is the first advantage that you have. The As far as the AIF was concerned, it was a long short AIF. It was a Cat 3 long short AIF, which yes, means the objective was absolute return generation, and post tax returns that you could expect were going to be higher than fixed income strategy. Whereas this particular product is on SIF platform, like I said, taxation is beneficial. Other than taxation, the idea here is that Arihant and Raghu will try to generate returns excess or over and above a flexi gap strategy, because they already have tools of generating a flexi kind of return, which shorting they will try to do over and above. So to sum up my, before I can invite Arihant and Raghu, is one, that platform was AIF, so heavily taxed platform. This platform is SIF, so the taxation is in line with our equity mutual funds. Two, that was an absolute return kind of strategy. There, a fund manager could go 100% short. That's not the strategy or platform this is. Here, essentially, the portfolio manager's idea is to generate alpha from long position over sustained period of time, and tactically take short calls whenever the timing model suggests that this could be a good opportunity. So in that sense, the two products are quite different. okay, Uh, okay. Raghu, Arihant, if you would want to add. Just to agree, just to see, like, just to like
अगर आप टिपिकली लॉन्ग शॉर्ट फंड होते हैं ग्लोबली ऑल्सो एंड एआईएफ ऑल्सो देयर यू आर टेकिंग लेवरेज. By leverage, I mean 100% is long, 100% is short, and then you try to create absolute return, which is like arbitrage plus kind of a fund. Okay. This is an equity fund with better downside protection. So very different strategy. Okay. And second, there the taxation. There are two problems with taxation. There the taxation is 42%, and second taxation is at what do you say, transaction level, not at the fund level. So every time you transact, you have to pay tax. Here it's like a typical mutual fund. So only when you sell, you have to pay the tax, and which is like 12.5%. So taxation. So there's a big taxation benefit, I will say. Okay. Okay. So I request partner, in case if you have any question, you can unmute and ask the question. I can see one question: how short positions are taken care in mid and small? I think this question is not covered, right? Yeah, you can answer. So, so SEBI के हिसाब से और रेगुलेटर्स के हिसाब से we can sort only 220 stocks जहाँ पे भी futures available है. So that will be large cap and top 100 mid cap. Small cap में कोई sorting allowed, like there is no sorting allowed as of today. So we'll be sorting mostly in top 200 stocks. And we have seen वहाँ पे liquidity बहुत अच्छी है. Not just because of SIF but because of arbitrage fund also. अगर आप देखोगे इंडिया की जो arbitrage book है, arbitrage fund book, it is more than I think 30 lakh crore. So, no, yeah, something like that, right? 3 lakh crore. 3 lakh crore. 3 lakh crore. And वहाँ पे they on a daily basis they do sorting. So they hold, let's say, HDFC long and HDFC short. So sorting liquidity is already very good because of that. So we are not seeing any problem from the liquidity from the large cap and mid cap. And so small cap is already not allowed right now. इंडेक्स का फ्यूचर या ऑप्शन अवेलेबल है कि इंडेक्स का भी नहीं है स्मॉल कैप का? नहीं, स्मॉल कैप में इंडेक्स का भी नहीं है. इंडेक्स का भी नहीं है. ओके. ओके. Any other questions? एक question शायद chat box में I think we missed. I don't know if we answered. The question is, can you please explain how short position can be considered throughout while doing a back testing? Good question. It's actually a good question. So in case of back testing, how have we considered short position? Aryan, that's what the question is What about. we have done, हमने बैक टेस्टिंग में लिए, हमने लॉन्ग बकेट में रखा ऑल 500 स्टॉक्स कि जो हमारा यूनिवर्स है, हम टॉप 500 स्टॉक में से कोई भी होल्ड कर सकते हैं. बट सॉर्टिंग में हमने क्या करा, एवरी मंथ एंड में हमने देखा टॉप 200 स्टॉक्स कौन से हैं और उनको सॉर्ट करा, एंड उनके 1 मंथ फॉरवर्ड रिटर्न को हमने यूज करा टू कैलकुलेट द बैक टेस्ट रिजल्ट. तो दिस इज हाउ वी हैव डिफाइन आप लॉन्ग. एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? तो हमने लॉन्ग के लिए क्या करा, 500 के लाइक 500 स्टॉक्स को लिया एंड उनमें से हम 80 स्टॉक्स 60 स्टॉक्स वी कैन सेलेक्ट एंड देन रीबैलेंस मंथली. हमने रीबैलेंस क्या करा, हर मंथ एंड में करा है. सो हमने लेट्स से हमने मार्च एंड में रीबैलेंस करा, देन हमने मार्च एंड से लेके अप्रैल तक का हमने रिटर्न निकाल लिया लॉन्ग का. एंड शॉर्ट में हमने सेम करा बट हमने यूनिवर्स को टॉप 200 रखा कि जो भी टॉप 200 स्टॉक्स है बाय मार्केट कैप दैट विल बी अवर शॉर्ट पोर्टफोलियो यूनिवर्स. एंड सेम चीज करें कि जिसको भी सॉर्ट करना है उनको हमने नेगेटिव वेट दे दी है. ओके. ओके. सो अगर नेगेटिव वेट है, नेगेटिव रिटर्न है, दैट मीन पॉजिटिव अल्फा. इफ नेगेटिव वेट है, पॉजिटिव रिटर्न है, दैट मीन नेगेटिव अल्फा. एंड देन वी कंबाइन देम, जो हमारा टाइमिंग मॉडल है 80-20 या 90-10, एंड देन हमने उनको कंबाइन कर दिया. ओके. ओके. Good. Very good. Any questions? I request last 5 minutes we have. Okay. So in case if you have any question, please unmute and ask the question. So let me ask one question. For a shorting and hedging, that is our objective is to basically generate the alpha. But any thought to generate the income by using derivative strategy, like many hybrid funds are using covered call strategy or maybe straddle, strangle, etc. So I will say कि mostly no. We will हम थोड़ा बहुत करें बाय चांस, like in when we see tactical thing but not in a regular basis, because hybrid में गोल क्या है, इनकम देना. यहाँ पे गोल क्या है, अपसाइड देना. बिकॉज अगर हम कवर्ड कॉल कॉन्टिन्यूसली सेल कर रहे हैं, हमको 2% की यील्ड मिल रही है एक्स्ट्रा, बट जो अपसाइड है वो हमने टोटली गिव अप कर दिया. एंड आप वो रिकवरी देखोगे डेक में, हमने बहुत बार देखा कि मार्केट 20% 30% की रिकवरी है, और उस रिकवरी में हम वो नहीं कर पाएंगे, like we will not be able to get that upside. So goal is to be equity portfolio with better downside.
So मतलब we are not trying to be very exotic when it comes to tail hedging, I will say. Okay. वो सब कुछ हम we will do more in that hybrid sense, not in this portfolio. Okay. एक क्वेश्चन है विक्रांत का, व्हाट फिलोसफी डू एफटी इंटरनेशनल फॉलो विद रिस्पेक्ट टू एसआईएफ और हेज फंड? Yeah, so maybe let me take that. So philosophy same है, but only difference जब globally हम लोग चला रहे long short, then the some of the funds that we run are like 150-50 or 130-30 चला रहे, so थोड़ा वहाँ पे leverage ज़्यादा ले रहे, but from a stocks and वहाँ पे timing model नहीं होता है because the mandate is to run like a 130-30 or a 150-50 kind of thing, right? So I can just generate the alpha on both sides, focus on the stock selection. So similarities, मेरा alpha model जो है, it picks up the stocks in the long and the short. That process we mastered on global, and we are going to have that as part of the India thing also, right? So that is more common. The additional element that we got into the India thing is the timing model, considering that from a SEBI perspective, the leverage has to be only 100% that kind of thing. So हमने customization यहाँ पे करा, which we don't use as part of our global strategies. Okay, one more question is, what does portfolio look like in current market scenario? Means what would be the net equity exposure, percentage of the hedging, etc., shorting? हरियन लेना आपको? Yes, sure. So अगर हम 2 महीने से देखें तो हमारा मॉडल सजेस्ट कर रहा था 90-10, 90 लॉन्ग एंड 10 शॉर्ट. एंड 10 शॉर्ट क्यों? बिकॉज टेक्निकली थिंग्स आर बेरिश, आई विल से. बट अगर हम मैक्रोस देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ, ओएसीडी ग्रोथ, इन्फ्लेशन वेरी टाइटली कंट्रोल, तो मैक्रोस आर स्टिल पॉजिटिव और न्यूट्रल. सो दैट्स व्हाई मॉडल इज सजेस्टिंग 90-10, आई विल से, इवन राइट नाउ. Right now also. Yeah. Okay. So right now you are at 90 net exposure, not 60 in this current situation. No, net exposure will be 80 because 90 long, 10 short. So Okay. net exposure become Net 80. would be 80. 80. Okay. Now one question from my side. In multi-factor model, when you select a long portfolio, okay, there are 4 factors are there. So you have a हर एक फैक्टर के हिसाब से आप 25% स्टॉक चूज करेंगे कि 25% मैंने वैल्यू के स्टॉक ले लिया, 25% मैंने क्वालिटी ले लिया, 25% मैंने मोमेंटम ले लिया, या मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर को कंसिडर करके मेरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा? तो इट बी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर. सो हम सर सेपरेटली नहीं देखते हैं इनको. जैसे क्वालिटी हम सेपरेटली नहीं देखते, हमने एक वेट दे रखा है. तो हमने क्वालिटी को एक वेट है, वैल्यू को एक वेट है, सेंटीमेंट को एक वेट है, ऑल्टरनेटिव्स को वेट है, एंड देन हम इन सब कॉम्बिनेशन करके हम फाइनल अल्फा स्कोर निकालते हैं. ओके, तो यानी कि 500 स्टॉक का एक स्कोर निकलेगा और जो उसका टॉप 70-80 आएंगे वो आपके पोर्टफोलियो में होगा. पोर्टफोलियो में आएंगे. यस. और उसमें भी वेट कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका वेट कितना रखना है मुझे? हाँ सर, जस्ट टू क्लोज द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज हम मल्टी फैक्टर क्यों देख रहे हैं? बिकॉज लेट्स से कोई कंपनी बेस्ट है क्वालिटी में, लेट्स से जो बेस्ट कंपनी है, बट अगर वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, देन इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं उस पर बहुत ओवरबोर्ड जाऊं. मे बी आई विल होल्ड इट, बट नॉट लाइक 2% का एक्टिव वेट या 1% का एक्टिव वेट, राइट? एंड हमने देखा, इफ यू सी लास्ट 10 years में quality companies has not worked, right? If I just focus on quality, same thing valuation also, because if I just focus on value company, अब देखोगे बहुत सारी कंपनी हमेशा चीप ही रहती है, वो कभी इंक्रीज नहीं होती. तो हम काइंड ऑफ एक ऑलराउंडर अप्रोच देख रहे हैं कि जिस कंपनी का क्वालिटी भी डिसेंट हो, वैल्यूएशन भी डिसेंट हो, एंड देन थोड़ा सा प्राइस या अर्निंग मोमेंटम हो. सो दैट्स अवर फिलॉसफी, मोर लाइक बाय अ ऑलराउंडर rather than a star, I will say. And so this is how we construct. And जो वेटिंग होती है, हम वेटिंग में हम 3 पैरामीटर्स देखते हैं. फर्स्ट इज द बेंचमार्क वेट, कि मॉड की बेंचमार्क में कितना वेट है, विच इज निफ्टी 500. सेकंड देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है. सो हम देखते हैं कि लास्ट 20 days में व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ट्रेडेड. एंड थर्ड देखते हैं वॉलेटिलिटी, बिकॉज हमें लगता है कि कंपनी का अगर वॉल कम है, देन उसमें हम एग्जिट अच्छे से कर पाएंगे. तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन देके हम वेटिंग देते हैं फॉर एवरी स्टॉक. ओके. और ये पूरा पोर्टफोलियो फंडामेंटल बेस्ड बनता है कि कहीं पे उसमें टेक्निकल थॉट प्रोसेस भी रहती है कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस जो है कि फंडामेंटली कंपनी एवरेज है, बट टेक्निक शॉर्ट टर्म में उसका ट्रेंडिंग बुल मार्केट चल रहा है तो मेरा ओवरवेट होगा, ऐसा कुछ?
सर हम ओवरवेट हम फैक्टर्स पे खेलते हैं। अगर हमें लग रहा है कि अभी अभी मार्केट बहुत स्टेबल रहेगी या अच्छा जाएगी, तो वी माइट हम थोड़ा सा मोमेंटम में अपना वेट इंक्रीज कर देंगे जब हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश चल रही है या थोड़ा स्टैग्नेंट है, देन थोड़ा हम वैल्यू फैक्टर पे ओवरवेट कर देते हैं। और लास्ट 4 महीने से हमने वैल्यू फैक्टर को थोड़ा सा ओवरवेट कर रखा है। अगेन हम ओवरबोर्ड नहीं करेंगे, बट टेक्निकली 5 से 10% वी इंक्रीज द वेट ऑफ सिंगल फैक्टर, सो दैट थोड़ा सा जो रिटर्न है वो थोड़ा स्मूथ मिले हमें कंपेयर टू वेरी वॉलेटाइल आई विल से। Okay, last question है, if I have to compare this product with equity flexicap mutual fund, what alpha I can expect by taking extra risk and additional expense ratio? हमने अगेन मेरे को कैन ऐड मोर, बट हमने देखा कि जनरल सॉरी चैट बॉक्स में ही आप पढ़ सकते हैं। हमने टिपिकली देखा कि दैट्स अवर होप कि लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो आफ्टर एक्सपेंस 1 to 1.5% it will give extra return compared to a typical flexi cap long only portfolio. ओके, और यहाँ पे कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की ही स्ट्रेटेजी है, तो एज पर सेबी गाइडलाइन जो म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो है वही एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे रहेगा। Deepak, you want to take that? या सो एग्जैक्टली सेम टैक्स स्लैब जो अप्लाई करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के टीईआर के लिए, टोटल एक्सपेंस रेशियो के लिए, वो सेम टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं एसआईएफ के लिए। सो यस, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, बट देयर इज नो एडिशनल एक्सपेंस दैट यू आर इनकरिंग। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अरिहंत हैज ऑलरेडी आंसर्ड। ओके, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडिशनल रिस्क नहीं ले रहे, लॉन्ग शॉर्ट से हम रिस्क को कम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्टार्टिंग से बताया रघु जी ने और अरिहंत ने कि लॉन्ग शॉर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है हम रिस्क कम करते हैं, यानी कि मेरा 80% लॉन्ग है और 20% शॉर्ट करता हूँ, इसका मतलब मैं टोटल एक्सपोजर 100 है बट मेरा नेट इक्विटी एक्सपोजर 60% हो जाएगा। एंड एज पर सेबी गाइडलाइन आई एम नॉट अलाउड टू टेक मोर देन 100% एक्सपोजर। सो एसआईएफ जो है उसका रिस्क जो है ओके वो आपका म्यूचुअल फंड से कम रहता है, इसलिए उसका बीटा जो है आप देखेंगे जो आपको पीपीटी में दिखाया वो भी कम रहता है, शार्पी ज्यादा रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका कम म्यूचुअल फंड स्कीम से रहता है। इफ आई एम राइट, सही अरेंजित? Yes, yes. Okay, so thank you very much, Raghuji, Arihant and Deepak for your insightful presentation. I am sure that कि ये हमने जो अभी मीटिंग किया है उसमें अभी 50-60 प्लस मेंबर्स अटेंड किया, हम उसको रिकॉर्ड यानी कि नेक्स्ट बाय टुमारो हम उसको अपलोड भी कर देंगे हमारे पार्टनर डेस्क पे, एंड विल स्टार्ट बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द आवर पार्टनर्स। आई एम श्योर दैट कि एक अच्छा एक रिजल्ट आने वाले पीरियड में हम मिलेगा हमें। आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते तो यू कैन गिव दी एनी क्लोजिंग रिमार्क्स। नहीं सर, क्यूर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से मॉडरेट किया, एंड the focused approach that you have towards SIF, we really like that approach. Your partners also, from the questions only we could make out that all the questions were well thought through and very sophisticated questions in that sense, because the partners understand this product category. They are already NISM 13 certified. That itself makes a very strong statement. आपने moderate भी call बहुत अच्छे से किया, and would like to thank Prudent also for giving us this platform to address your partners. 10th of April, that is coming Friday, officially this fund opens. 24th April it will close. We are working closely with the technology team at Prudent to make it available even on Fund Bazaar, so that your execution also becomes seamless. And we hope we can get good participation from this group in this product category. Sure, 100%. Thank you very much, each of you, for sharing your insightful presentation. Thank you. Thank you. Thank you, Keyur sir. Thank you, everyone. Yeah, thank you.